Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Hani Abid and I'm an assistant professor at ComSat's Institute of Information Technology. I'm also the in charge of the MBA programs at ComSats. I look after the administrative and academic matters of this program. आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के कोर्स के लिए, जिसको हम ई मार्केटिंग भी कहते हैं. ये आपके MBA प्रोग्राम का स्कीम ऑफ स्टडी का हिस्सा है. मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के इलेक्टिव्स के कोर्सेज में से स्टूडेंट्स इस कोर्स को चूज करते हैं. आइए इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं. ये कोर्स हमें इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेसेस जो डिफरेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, कैसे वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं. As you all know that organizations of all types and sizes are faced with the challenge of doing businesses online. अगर वो ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखते हैं आजकल के दौर में, तो वो रिस्क कर लेते हैं इस बात को कि शायद वो बिजनेस में ना रह पाएं या उनके कस्टमर्स उन तक ना पहुंच पाएं. सो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम इस कोर्स में इम्पैक्ट देखेंगे इंटरनेट का, वर्ल्ड वाइड वेब का, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ का, आजकल की मार्केटिंग इनोवेशंस के ऊपर. हम इस कोर्स में ये चीज़ भी जानना चाहेंगे कि कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं यूजिंग ऑनलाइन मीडिया, यूजिंग द सोशल मीडिया, यूजिंग द मोबाइल मीडिया. हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं. ये कोर्स एक 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है और कोर्स की नीड्स मोटिवेट हुई हैं. इट हैज़ बीन मोटिवेटेड बाय द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू कंडक्ट बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिकली एंड द की रोल ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इन देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज. These are some of the course objectives. We will understand the internet, social media and the electronic marketing technologies. We will look at electronic marketing business models. We will try to explain different types of internet users and technology based users. हम internet के ऊपर marketing research कैसे की जा सकती है उसको देखेंगे. हम प्रॉफिटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आइडियाज़ को देखेंगे. दैट इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स. वी विल लुक इनटू और द कोर्स विल लुक इनटू अंडरस्टैंडिंग हाउ increasing customer control is changing the way businesses operate today, and then we will talk about different legal and ethical issues regarding internet usage. Some of the topics include electronic marketing in context, past, present, future, the electronic marketing plans, the electronic marketing environment, some ethical legal issues, marketing research, consumer behavior online, e-marketing management, product and pricing, buying digital media space, and so on and so forth. Recommended texts for this course include the following. We have a book available in the market which is named as E-Marketing. इस book की author हैं Judy Strauss and Raymond Frost, और ये book Judy ने लिखी है based on her own experiences. She has been a user of internet since 1986. तो उन्होंने अपना जो इतने सालों में जो experiences accumulate किए हैं while using internet and while making strategies for different organizations और marketing पे काम करते हुए, वो इस book में उन्होंने base लिखा हुआ है. इसके अलावा हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें इंक्लूड होता है गूगल का जो जितना भी डिजिटल मार्केटिंग मटेरियल है, गूगल बीइंग द मार्केट लीडर्स इन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि सिंस इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल बुक्स की फॉर्म में कई दफ़ा मौजूद नहीं होता है, स्पेशली जो कि नए रेलेवेंट टॉपिक्स आ रहे होते हैं. सो हम ऐसा कुछ भी मटेरियल जो आता रहेगा वो इंटरनेट से, आर्टिकल्स से, रिसर्च आर्टिकल्स से भी पिक करेंगे और आपसे शेयर किया जाएगा. कोर्स कैसे कंडक्ट किया जाएगा? हमारे लेक्चर्स होंगे जैसे कि आपके बाकी प्रोग्राम में, MBA प्रोग्राम के
لیکچرز ہوتے ہیں. یو ول ہیو ایکسیس ٹو یور ڈسکشن ایریاز بھی اینڈ دا ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ از ویل. ہمارے لیکچرز کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کورس کا انٹینٹ ہے وہ دیٹ از بیسڈ آن سبجیکٹ پرسپیکٹو. ہم لوگ آؤٹ لائن کورس آؤٹ لائن کی کمپلیشن پہ حوالے سے بات کریں گے. کورس آؤٹ لائن اگین آپ کے پورٹلس کے اوپر اپلوڈ کر دی جائے گی. اٹ ول ہیو ڈیٹیلز آن the requirements of the course. ٹیکسٹ بکس کو آپ ضرور یوز کیجیے گا, جو کہ آپ سپلیمنٹری مٹیریل بھی موجود ہوگا آپ کی کورس آؤٹ لائن کے اندر, اس کو بھی پلیز ضرور ریفر کیجیے گا. پاور پوائنٹ سلائڈس بھی آپ کے ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی جائیں گی. I would recommend that you have extensive interaction with other students on your discussion boards as well. جیسے کہ ہم یوزلی کلاس روم میں بھی اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انٹریکشن کیا جائے, اسی طرح سے آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جا کر آن لائن ڈسکشن فورمس کے اوپر اپنی ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ کے اوپر اپنے ٹیوٹر کے ساتھ بھی اپنا انٹریکشن جاری رکھیے. اپنی اسائنمنٹس ضرور ٹائم پہ کمپلیٹ کیجیے گا. another very important aspect of the course. plagiarism obviously is not accepted. آگے میں do's and don'ts of the course کے اندر mention کرتی ہوں. There are certain rules that I usually tend to give to my students during the first classes of their courses, اور آپ سے بھی وہی شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو پلیز listen attentively and carefully. Listening is the basis for comprehension. جتنا آپ اچھے سے سنیں گے اتنا زیادہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے. سو کوشش کیجئے کہ آپ اپنا اٹینشن دیجئے کورس مٹیریل کو, لیکچرز کو, اور جہاں پہ بھی آپ کو ہیلپ چاہیے اپنے کورس ٹیوٹرز کو ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا. آپ کو جو کورس لٹریچر دیا جائے گا, جتنا ورک مٹیریل دیا جائے گا, اسے ضرور پڑھیے گا. میں سلائڈس تو ضرور شیئر کر رہی ہوں, آپ لوگوں کے پاس اپلوڈ بھی ہوں گی, بٹ اٹ از آلویز بیٹر کہ اپنی اسٹڈی میں صرف لیکچر سننے کے علاوہ اپنے مٹیریل کو دھیان سے پڑھیے گا بھی. پاور پوائنٹ سلائڈس آپ کی جو آپ کو ملیں گی, دے آر ناٹ انف فار یو ٹو ریڈ فار دا فائنل ایگزامینیشن. آپ کو جو ایکسٹرا مٹیریل ہے, انٹرنیٹ پہ جو مٹیریل ریلیونٹ ٹاپکس کا موجود ہے, اس کو ضرور ریڈ کیجیے. کوشچنس ہیں تو دوسروں سے ضرور کوشچن پوچھیے گا, اور باقی جتنا ریکمینڈیڈ ٹیکسٹ آپ کو دیا جائے گا اس کو بھی ضرور پڑھیے گا. جب کبھی کوئی پرابلم ہو, کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو, پلیز ڈو کانٹیکٹ یور ٹیوٹر. اگر کوئی بھی کورس ریلیٹڈ پرابلم ہے, they would be happy to help you out. Ask questions. Do not procrastinate. اپنا کام بعد میں نہیں چھوڑیے گا, لیٹ نہیں, آج کا کام کل پہ نہیں ڈالیے گا. جو آپ کی ویکلی اسائنمنٹس ہیں, جو آپ کی ریگولر اسائنمنٹس ہیں, آپ کی جو ویکلی کلاسز ہیں, اس کو ضرور فالو کیجیے. اپنے ٹیوٹرز کو بعد میں کانٹیکٹ نہ کیجیے گا فار ایکسٹرا مارکس. اگر آپ نے اسائنمنٹ ٹائم پہ سبمٹ نہیں کی تھی, آبویسلی وہ آپ کو ریفلیکٹ کرے گی آپ کے فائنل گریڈ کے اوپر. اگر آپ کے اسائنمنٹس کے اندر پرفارمنس اچھی نہیں ہے, ایگزام کے اندر پرفارمنس اچھی نہیں ہے, بیسڈ آن واٹ ہیز بین آسکڈ, وہ آپ کے ریفلیکٹ کرے گی فائنل گریڈ کے اوپر. بٹ ڈو ناٹ پیسٹر یور ٹیوٹرز فار مور مارکس. آپ نے جو کام کیا ہے, اگر اچھا کیا ہے تو آپ کو اچھے مارکس ضرور ملیں گے. چیٹنگ از اگین نو ٹالرنس فار دیٹ. ایگزامس میں, سیشنلز میں کبھی بھی پلیز ڈو ناٹ چیٹ. Another very important thing that we tell our students is not to plagiarize. Plagiarize کا مطلب I'm sure کہ آپ سب کو معلوم ہے. Plagiarism ہوتا ہے کہ کسی اور کے کام کو اپنا کہہ کے reproduce کر دینا. Do not copy paste stuff from the internet. Do not copy and paste stuff from different other sources. آپ ضرور ریسرچ کیجیے, آپ ضرور آئیڈیاز لیجیے, آپ ضرور کہیں اور سے انفارمیشن لیجیے, بٹ آلویز ٹرائی ٹو رائٹ اٹ ان یور اون ورڈس. سو پلیجرزم کے اوپر ہمارے پاس نو ٹالرنس پالیسی ہے. اب کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. دا ڈونٹس. پلیز رٹا لگانے کی کورس میں ضرورت نہیں ہے. کورس کو سمجھیے, کانسیپٹس کو سمجھیے اور ان کو انڈرسٹینڈ کیجیے, اور پھر اپنے الفاظ میں بے شک ان کو لکھیے گا.
جو مجھے لرننگ میں ایک ورسٹ چیز لگتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ رٹا لگاتے ہیں. رٹا لگانا از ناٹ نیسسری فار دس کورس. کورس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اگین we always get 3 different types of students in our classes and I'm sure کہ آپ میں سے بھی جو ایویلویشن ہوتی ہے وہ مختلف کورسز کی مختلف طرح کی ایویلویشن آتی ہے. All teachers and everyone wants to be an A student, so try to be very highly motivated, hard working and ambitious. ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر کے جو کہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں. سو آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ آپ سب کے سب جو ہیں وہ ایک اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس کورس میں سامنے آئیں گے. Other types of students are average students, horror students. We do not want horror students and I'm sure آپ لوگ بھی, آپ میں سے کوئی بھی ایک horror student نہیں ہوگا. کورس کی اسیسمنٹ کیسے کی جائے گی؟ آپ کا کورس 3 طرح سے اسیس کیا جاتا ہے. کورس کی پرفارمنس, کوئزز, اسائنمنٹس اینڈ پروجیکٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈیورنگ دا سیمسٹر دیے جاتے رہتے ہیں. سو 25 مارکس آپ کے کوئزز, اسائنمنٹس اینڈ پروجیکٹس کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ٹیوٹرز ایویلویٹ کرتے ہیں اور پوائنٹس بیسڈ ایوریجز لی جاتی ہیں ان تینوں کیسز کی. پھر آپ کا ایک مڈ ٹرم ایگزام کیا جائے گا which would amount towards 25 marks, so کہ آپ کے فائنل گریڈ کا حصہ ہوگا. اینڈ فائنل ایگزامینیشن would be of 50 marks جو کہ سیمسٹر کے اینڈ میں آپ سے لیا جائے گا. So there will be a total of 100 marks جس میں سے آپ کی گریڈنگ کی جائے گی. آئیے اب فارملی کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا پہلا لیکچر جو ہے وہ الیکٹرانک مارکیٹنگ کے پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر کے بارے میں ہے. We will develop an understanding of the background of the current state and future potential of electronic marketing. اس لیکچر کے آبجیکٹیوز ہمارے پاس موجود ہیں. At the end of this lecture we will be able to explain how internet and information technology offer benefits to consumers, businesses and society. We will distinguish between e-business and e-marketing. We will look at how increasing buyer control is changing the marketing landscape. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ میں کیسے ڈسٹنکشن ہے. We will also look at different trends that shape the future of electronic marketing. I would read an excerpt from a book written by Zygmunt Diamico, and he states that internet is transforming society. Time is collapsing. Distance is no longer an obstacle. Crossing oceans only takes a mouse click. People are connected 24 hours a day, 7 days a week. Instantaneous has a new meaning. Some say the internet is changing everything, especially commerce. E-commerce is the business model for the new millennium, and the engine driving e-commerce is marketing. To hundreds of millions, .com has become as familiar as neighborhood bricks and mortar stores. Yet, bricks and mortar organizations are embracing the internet too. So, reading this excerpt, ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری آج کی وے آف لیونگ ہیز بین انفلوئنسڈ. ہم لوگ ماؤس کے کلک کے اوپر بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو آج سے 10-20 سال پہلے کی جنریشنز نہیں کر پاتی تھیں یا اس ٹائم کے اوپر اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتے تھے. So the old message, market and medium have been replaced by conversation, community and connection. The whole trend has been changing. اور اس چیز کی changing force کیا ہے؟ اس چیز کی changing forces companies ہیں, organizations ہیں like Google. Changing force ہے internet itself. گوگل کو اگر دیکھا جائے, گوگل ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 1998 میں فارم ہوئی تھی. لیری پیج اور سارجی نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور ایک سرچ انجن بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ سرچ انجن فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے اور اس نے بہت زیادہ مارکیٹنگ بز کریٹ کر دیا, ایک انٹرپرسنل ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کر لیا گیا.
Google is the reason why so many internet users find what they're looking for online. لوگ جو ہیں وہ اپنی سرچ کو آسان بنا لیتے ہیں, چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں, پرچیزز کر پاتے ہیں just because of the availability of this search engine. The search engine offers unique page rank technology and search analysis, and Google market کرتا ہے اپنی اسی scalable technology کو. Scalable technology سے میری مراد یہ ہے کہ Google کی جو search engine algorithms ہیں, یا Google جس طریقے سے لوگوں کی searches کو analyze کرتا ہے, اس کو with changing market trends enhance کرتا جا رہا ہے. سو جو چیز سرچبل 10 سال پہلے نہیں تھی اور لوگوں نے سرچ کیا, اس ٹرینڈ کو وہ اسٹور کرتے رہے اور اپنے الگوریدمس کو انہانس کرتے رہے اور اپنی ٹیکنالوجی کو ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتے رہے. گوگل کے پاس ایک اور اچھی چیز ہے, ایک انوویٹیو اینڈ نان انٹروسیو ایڈورٹائزنگ. یعنی جب ہم کسی سرچ کو گوگل کے سرچ بار میں لکھتے ہیں تو وی گیٹ اے لاٹ آف ریزلٹس, اور ان ریزلٹس میں سے کچھ ریزلٹس ہمیں ٹاپ آف دا پیج یا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا پیج یا باٹم آف دا پیج نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ پیڈ ایڈورٹائزڈ ریزلٹس ہوتے ہیں. یعنی ان کمپنیز نے گوگل کو پے کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی یوزر نے فار ایگزامپل چاکلیٹ کو سرچ کیا ہے تو میری چاکلیٹ کمپنی کو یہاں پہ سرچ ریزلٹس میں ان 3-4 لوکیشنز کے اوپر ڈسپلے کرا دیجیے. سو جب یوزرز ان ایڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ سرچ ریزلٹس ہی لگ رہے ہوتے ہیں. سو دس از اے فارم آف انوویٹیو اینڈ نان انٹروسیو ایڈورٹائزنگ. لوگوں کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک ایکسٹرا چیز ان کے اوپر امپوز کی جا رہی ہے, فورس کی جا رہی ہے, نان انٹروسیو نہیں ہوتی ہے. سو یہ ریزن کیوں تھے, کیا ریزن تھا کہ گوگل اتنی زیادہ سکسیسفل ہوئی؟ گوگل نے ایکوریسی, اسپیڈ, سمپلسٹی اینڈ ڈلیوری آف کانٹینٹ کو اپنی پرائرٹی رکھا, اور اس وجہ سے ان کے کنزیومرز, یوزرز جو کہ ہم سبھی ہیں, وی آر ویری ہیپی. ہم ایڈورٹائزرز کے طور پہ بھی بہت خوش رہتے ہیں گوگل سے, کیونکہ ہمیں ایکسیس ملتا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو چیز ہم نے ایڈورٹائز کی ہے آن دی انٹرنیٹ اس کے ریزلٹس کیا ہیں. میننگ کتنے لوگوں نے اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ لیا, کتنے لوگوں نے اس کو کلک کر لیا, کتنے لوگوں نے اس کی بیس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس لیے ہمیں اس ٹیکنالوجی بیسڈ ایڈورٹائزمنٹ کا فائدہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. Businesses benefit by investing in Google's technology, and everyone benefits from Google, whether it's business, whether it's advertiser, whether it's a user, because of the search they are able to do. So جب اس طرح کی organizations آ گئی ہیں جنہوں نے delivery of content, speed, accuracy بہت enhance کر دیا ہے, so obviously there has been a shift, ایک پورا shift ہو رہا ہے the way business is being done in organizations. Recent elections بھی آپ کو example کے طور پہ you might have seen that how different parties and how different people had targeted a particular group of people who would go out and vote for them. So there was a very massive social media campaign going on during different elections in Pakistan as well as in other countries as well. So کیا ہے کہ فیس بک کے پیجز بنائے گئے, millions لوگوں نے ان پیجز کو کلک کیا. There was a lot of interest among voters. الیکٹرانک ووٹنگ کے کانسیپٹ کا ذکر کرنا شروع کر دیا گیا, and then that is again possible because of the internet. So there is a lot of possibility, there are a lot of ways where organizations can kind of reach out to their consumers. کنزیومرز کو میسج پہنچا سکتی ہیں, کنزیومرز کو اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں, کسی اور کے بارے میں بتا سکتے ہیں, ریفر کر سکتے ہیں. یوزرز دوسروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں, بزنسز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. سو دیر از اے میسو شفٹ ان دا لاسٹ 10 years, اینڈ دیٹ واز آل بیکاز آف دا انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ کیا ہے؟ آئی تھنک ایوری ون آف اس نوز, اسپیشلی اگر آپ اس کورس کو دیکھ پا رہے ہیں, سن پا رہے ہیں, اپنے ٹیوٹرز کے ساتھ کانٹیکٹ کر پا رہے ہیں, دیٹ از آل بیکاز آف دا انٹرنیٹ. آپ ای میل کرتے ہیں, کلک
किया और आपकी ईमेल पहुंच गई और कुछ ही घंटों और कई दफ़ा तो कुछ ही मिनट्स के बाद ही आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाता है. So the internet has been the driving force. What is internet? If we ask you to define what internet is, so how would you define it? Internet is a global network of interconnected networks. There are small networks, they're connected to bigger networks, and there is a global network that has come into shape and which is known as internet. Email and data files move over phone lines, cables and satellites, become part of the internet. Internet की 3 types हैं, जिसको हम एक तो जो फेमसली जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज पब्लिक इंटरनेट. पब्लिकली आपके नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और विद इन सेकेंड्स कम्युनिकेशन हो जाती है, मैसेज एक से दूसरे तक पहुंच जाता है. देयर आर अदर 2 टाइप्स. द अदर वन इज इंट्रानेट एंड अनदर वन इज एक्स्ट्रानेट. इंट्रानेट क्या चीज है कि intranet is a network that runs internally in an organization, while extranet is 2 joined networks that share information. So अब कई organizations ऐसी हैं जो कहती हैं कि जी हमारी information हम सिर्फ within the organization जितने लोग users हैं वो लोग use कर सकें. So that is a kind of a private network for that organization जो कि सिर्फ internally एक organization के लोग ही access कर पाते हैं. और extranet क्या है? extranet ऐसा नेटवर्क है जो कि शेयर इन्फॉर्मेशन करता है बिटवीन 2 ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सटेंड कर दिया जाता है इंट्रानेट को. Let's now look at some definitions. अब इंटरनेट को तो हमने समझ लिया कि इंटरनेट जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस एक्टिविटीज. अब वो ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं उनकी फिर नई तरह की फॉर्म इमर्ज होना शुरू हो गई है, नई तरह की डेफिनेशंस इमर्ज होना शुरू हो गई हैं. So let's look at what these definitions are. We talk about electronic business, which is in smaller form referred to as e-business. E-business is the continuous optimization of a firm's business activities through digital technology. What do I mean by that? It means कि आप जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे थे, उस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोगों ने टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस कर ली हैं. कंप्यूटर सिस्टम्स ले आए, नेटवर्क्स बना लिए, सॉफ्टवेयर ले आए, डेटाबेसेस इंस्टॉल कर ली, ERP सॉफ्टवेयर, हम सब ने SAP, Oracle, इस तरह के सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे. सो ये सब चीज़ें जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि जी दिस इज नाउ बिकमिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एज वेल, विच इज़ नाउ काइंड ऑफ रेफर टू एज ओनली बिजनेस एज वेल. कि हम एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि जी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू हो गया और मे बी इवेंचुअली हम ई बिजनेस के बजाय इसको सिर्फ बिजनेस ही कह सकते हैं. Another definition that is necessary for this course is electronic commerce, and electronic commerce or e-commerce is the subset of a e-business, which means कि जो हमारी buying and selling activity है एक organization के अंदर की, उसको हम electronic commerce कहते हैं based on transactions. Right? So e-business is using technology in your business operations. Technology को ले आना business activities को run करने के लिए, that becomes your e-business. While e-commerce is based on the transactions part only, sales and purchase. जो हमारी websites हैं जहाँ से shopping की जा सकती है, online shopping websites, shopping carts जो run करती हैं, उन websites को हम कहते हैं कि जी e-commerce based websites हैं या e-commerce based businesses हैं. Then comes electronic marketing. Electronic marketing क्या चीज़ है? Electronic marketing is the result of information and communication technology applied to traditional marketing. Marketing के concepts जो traditional marketing के concepts हैं वो तो change नहीं हो रहे हैं या वो हो रहे हैं with time, with introduction of technology in it, and that becomes your electronic marketing. Achieving marketing objectives through applying electronic and digital technologies, that is using the internet, the email and the wireless media, which obviously includes your mobile phones, paging devices, PDAs and things like that. Then digital customer data and electronic
consumer relationship management systems are also grouped under e-marketing. So जहाँ पर भी आपका interaction हो रहा है customers के साथ using other means जैसे customer relationship management system या software हैं जो customer end तक भी पहुँच रहे हैं, आप customers की information एक end से दूसरी end पे transfer भी कर रहे हैं, so that also becomes part of e-marketing. Remember that it is the results delivered by technology that should determine the success and investment in e-marketing, not the adoption of technology. Adoption of technology is to help you, to facilitate you. Lekin it is the results that technology delivers in terms of your marketing activities success, जो आपकी अच्छी performance करती है, एक investment को justify करती है, that is basically the intention and that is basically what we're looking for in e-marketing. Let's इस slide के ऊपर देखिए कि हमारे पास कितनी तरह के तरीके हैं electronic marketing activities करने के लिए. अभी we have laptops, we have mobile phones, we have other types of phones, we have so many different websites जिसके साथ हम लोगों तक अपने messages पहुंचा रहे हैं, हम लोगों के साथ involve होना चाह रहे हैं. We talk about webinars, we talk about electronic commerce based websites, we talk about social media, we talk about search engine optimization, search results में हमारे display आने चाहिए. Okay, so e-marketing is not only considered to market the product over the internet, but it includes marketing through emails, CRM, wireless media. It is not referred to many stages other than the emails and the social media. We are also using a search engine optimization. We also use ads via different other websites. Mobile ads are also considered part of e-marketing. E-marketing को हम मुख्तलिफ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि वेब मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग. क्या ये सब चीज़ें एक ही हैं? ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है. And does the difference between these terms really matter? No, it does not matter. Trends change. पहले traditionally जो है वो सिर्फ इंटरनेट मार्केटिंग कहा जाता था, फिर जैसे जैसे नई और टेक्नोलॉजीज और नए और ज़राए आना शुरू हो गए तो हमने ई मार्केटिंग कहना और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कहना शुरू कर दिया. फिर उसी को नए डिजिटल ट्रेंड्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी कहलाया जाने लग गया. सो द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स डज नॉट रियली मैटर. ये सारी चीज़ें एक ही हैं एंड दे आर ऑल रेफर्ड टू using the means to market the products and services using emerging communication technologies. E-marketing is also bigger than the web. What is the web? हम लोग अक्सर जब भी वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं तो हम एक www.google.com यूज़ करते हैं. सो google.com तो हमारे पास वो डोमेन नेम है. www गाइड करती है कि ये डोमेन और इसके डॉक्यूमेंट्स रिजाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर. सो वेब इज द पोर्शन ऑफ द इंटरनेट दैट सपोर्ट्स अ graphical यूजर इंटरफेस फॉर हाइपरटेक्स्ट नेविगेशन विद अ ब्राउजर, which means कि हम मुख्तलिफ तरह के वेब ब्राउजर्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, गूगल का अपना सॉफ्टवेयर क्रोम है, ये सारे के सारे हमें हेल्प आउट करते हैं इंटरनेट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए. उन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. जैसे कि आपकी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स आर ऑल हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. सो ये डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होते हैं ऑन द वेब. सो वेब इज ओनली अ पोर्शन ऑन द इंटरनेट एंड वेब इज व्हाट वी थिंक अबाउट व्हेन वी थिंक ऑफ इंटरनेट. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग वेब से बियॉन्ड भी जाती है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र भी किया है कि इट इज नॉट थ्रू वेबसाइट्स अलोन, इट इज देयर आर अदर मीडियम एज वेल. देयर इज ईमेल मार्केटिंग, देयर इज मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस बेस्ड मार्केटिंग. सो द वेब इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ई मार्केटिंग, जिसमें हमारे पास डिजिटल कंटेंट है, डेटा है, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स एंड वीडियोस जो कि हम डिस्प्ले करते हैं यूजर के एंड तक थ्रू इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन. इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? यूजिंग टेलीफोन, यूजिंग डिफरेंट मोडम्स, cables, DSL, Wi-Fi,
things like that. اور دوسرے اینڈ کے اوپر جو ہمارے اپلائنسز ہیں جن کے اوپر ہم یہ ڈیجیٹل کانٹینٹ ویو کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ فیڈ بیک واپس بھی بھجواتے ہیں, they include computers, they include smartphones, they include television, automobiles, refrigerators and things like that. So it is very important to understand the bigger picture where electronic marketing would happen, how would it happen. There are different devices, different technologies, not just the web or not just the internet alone. Internet provides individual users with convenient and continuous access to information, entertainment and communications. However, I mean, with individuals being able to take control of things, ہمارے پاس ایک سیناریو چینج ہو جاتا ہے کہ جی اب یوزر جو ہے اتنا انفارمڈ ہے, ہم اس کے پاس ایکسیس ہے, وہ اور لوگوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں اور کمپیٹیٹرز کے بارے میں بھی انفارمیشن جان سکتا ہے. سو یوزرز کیا چاہتے ہیں, انڈیویجولس کیا چاہتے ہیں کہ انہیں کنوینئنٹ اینڈ کنٹینیوس ایکسیس آف انفارمیشن ملتی رہے. پھر جب انفارمیشن ملتی ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں, وہ اپنی پکچرز بھی شیئر کرتے ہیں, وہ کمیونٹیز فارم کر لیتے ہیں. آپ کو وہ کمیونٹیز نظر آتی ہیں ان دا فارم آف ڈسکشن بورڈز نظر آتے ہیں, ویب سائٹس نظر آتی ہیں جہاں پہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں, جیسے لائک فیس بک اور فلکر اور یوٹیوب. پھر ہمارے پاس ایک بزنسز کی اینٹی آ جاتی ہے, الیکٹرانک مارکیٹنگ بزنسز obviously یوز کر رہے ہیں. سو آپ کے پاس ایک انہانسڈ انوائرمنٹ بزنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان کے پروسیسز اینڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں کہ لوگوں تک میسیجز کنوے ہو سکیں یوزنگ دا نیور ٹیکنالوجیز. اینڈ دین سوسائٹیز آر بلٹ ایز ویل. سوسائٹیز کیا ہیں کہ آپ کے پاس ایفیشینٹ مارکیٹس بن رہی ہیں, زیادہ جابس آ رہی ہیں, انفارمیشن ایکسیس زیادہ آسان ہو رہا ہے. سو آپ کی سوسائٹیز بھی انہانس ہو جاتی ہیں using all different ways of means of technology adoption and technology implementation. Let's have a look at some global internet users. ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے کہ there has been an increase in the number of users of internet during the past 10 years or 20 years. اور اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی ایشیا کے اندر 42% ہے انٹرنیٹ یوسیج انکریز کا. پاکستان کے اندر بھی by 2012 there were 10% of the population who started using internet. So کہ 2012 and 2013 میں کچھ اور سرویز کچھ بلاگنگ سائٹس پہ نظر آتے ہیں کیے گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی it's now increased towards 12%, so which is a very high rate within our own region among other countries like Bangladesh and the sort. So انٹرنیٹ یوزرز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے بھی ایک اور ریزن ہم آرگنائزیشنز کو ملتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کریں اور الیکٹرانک مارکیٹنگ کی طرف چلتے چلے جائیں. الیکٹرانک کا مارکیٹنگ کا پاسٹ کیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دیر ہیو بین ڈفرنٹ اسٹیجز. ویب 1 تھا, ویب 2 تھا, ویب 3 آ رہا ہے. سو ویب 1 کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس انٹرنیٹ اسٹارٹ ہوا تھا 1969 میں, which means internet is basically 40 plus years old, and it was formed in the form of ARPANET. ایک ARPANET جو کہ اکیڈیمک اور ملٹری یوز کے لیے بنایا گیا تھا, جس میں صرف اکیڈیمشنز اور ملٹری کے لوگ آپس میں کمیونیکیشن کے لیے ایک نیٹ ورک کچھ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر کے بناتے تھے. پھر اس کے بعد اس پہ کام ہوتا گیا, اس کو کمپنیز نے ایونچولی کمرشلائز کر لیا, اور 1993 آنورڈز انٹرنیٹ جو ہے وہ عام یوزر کے پاس موجود تھا. ویب پیجز بننا شروع ہو گئے, ویب براؤزرز بننا شروع ہو گئے ان دا فارم آف انٹرنیٹ ایکسپلورر, اس طرح کے کام ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر فرسٹ جنریشن آف جو ای بزنس ہے وہ تھی, دیٹ واز 1994 آنورڈس. لوگوں نے اپنی ویب سائٹس بنانا شروع کر دیں, بزنسز نے اپنی ویب سائٹس بنانا شروع کر دیں. اینڈ بٹوین 2000 and 2002 there were more than 500 internet firms who were shut down. ایک ببل برسٹ بھی ہو گیا تھا, کیونکہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ جی .com is the only thing that they should adopt اور سکسیس ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ اور بھی اس کے جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں وہ ریئلائز نہیں کی گئی تھیں.
So by 2013 again उस बबल बर्स्ट के बाद दोबारा काम किया गया, and by 2003 almost 60% of those were successful. So अगर हम इंटरनेट की एक टाइमलाइन को देखें तो इट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइमलाइन. आपकी बुक में भी एक डिटेल में टाइमलाइन मौजूद है, स्लाइड्स आपके अपलोड हो जाएंगी, यू वुड बी एबल टू रीड इट इन अ बेटर वे. फ्रॉम 1969 ऑनवर्ड्स 2010 उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जी कब क्या क्या हुआ. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 1969 के अंदर ARPANET फॉर्म हुआ था, फिर फर्स्ट मेलिंग लिस्ट क्रिएट की गई थी 1975 में, विच मीन्स कि एक ईमेल बहुत सारे लोगों को भेजी जा सकती थी. पहले इंडिविजुअल ईमेल सेंड होती थी, फिर विद बाय 1975 ज्यादा लोगों के ईमेलिंग लिस्ट बनानी शुरू कर दी गई. 1979 में एक यूजनेट के नाम से नेटवर्क बनाया गया जहां पे डिस्कशंस होस्ट की जाती थी, और फिर लेटर जो है वो गूगल ग्रुप्स ने उसको मैनेज करके अभी उसके ऊपर फर्स्ट मैसेजेस जो 800 मैसेजेस उस टाइम के ऊपर हुए थे उनको आर्काइव किया हुआ है. यू कैन हैव अ लुक एट दैट. 1984 के अंदर फिर कनेक्टेड कंप्यूटर जो थे वो इंक्रीज होना शुरू हो गए. 1987 के अंदर वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए, और एक ईमेल कनेक्शन फर्स्ट जो है अक्रॉस बॉर्डर्स वो वजूद में आया. देन 1988 के अंदर वायरस, फर्स्ट वायरस आया, इंट्रोड्यूस हुआ. वायरस मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर वायरस जो कि कई कंप्यूटर्स को उसने अफेक्ट कर दिया. फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ, और फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस किस्म की चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हो गई. 1993 के अंदर फर्स्ट वेबसाइट अपीयर हुई थी, ठीक है, एंड दैट इज व्हेन मीडिया टुक नोटिस, और उन्होंने कहा कि जी ओके देयर इज समथिंग देयर इन दिस वेबसाइट दैट कैन मेक अ डिफरेंस. और फिर 1994 के अंदर बैनर एड्स वेबसाइट्स के ऊपर आना शुरू हो गए थे. उस टाइम के ऊपर वेबसाइट्स ने बैनर एड्स जो हैं वो दिखाने शुरू कर दिए थे. एंड यू कैन सी देयर वाज अ जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड. hotwired.com वेरी पॉपुलर वेबसाइट एट दैट टाइम वाज देयर, उसके ऊपर डिस्प्ले किए गए. 1995 में eBay, which is now a very popular worldwide auction based website, और लोग अपनी चीजें बाय एंड सेल करते हैं थ्रू eBay, उसने अपने डोर्स ओपन किए इन 1995. सो क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग बिजनेस को उसने डिसरप्ट भी किया और एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल को लेकर आए ऑक्शन बेस्ड बिजनेसेस के लिए. 2000 के अंदर Napster ने एक और नया काम किया. उन्होंने पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो कि आम फेम ज़मान में P2P नेटवर्क्स के तौर पर जाने जाते हैं, लोग अपने कंप्यूटर्स के ऊपर चीज़ें होस्ट कर देते थे, स्टोर कर देते थे, और कोई और यूज़र अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकता था. Napster आया 2000 के अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के अंदर, और उसके बाद जो है उसी टाइम के ऊपर हमारे पास .com क्रैश का टाइम भी आया, या .com बबल बर्स्ट का टाइम भी आया, कि बिजनेसेस ने वेबसाइट्स तो बना ली, बट businesses showed that e-commerce does not always work because there were other issues associated with that. 2002 के अंदर we had the blogging trend emerged. हमारे पास लोग क्या कहते थे कि जी अब अगर कोई ब्लॉग रन कर रहा है ना तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, तो एक अच्छी बात समझी जाती थी, और लोग अपने ब्लॉग्स बड़े बना के उनको शो ऑफ भी करते थे कि जी आई रन माई ओन ब्लॉग. सो 2002 ऑनवर्ड्स ब्लॉगिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था. एंड 2003 के अंदर जब P2P नेटवर्क्स और लोग चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा शेयर किया जाने लग गया था, लोग बगैर कॉस्ट के एक दूसरे से म्यूज़िक की कॉपीज़ ले लेते थे, सुन लेते थे. म्यूज़िक इंडस्ट्री हैड स्टार्टेड डिस्ट्रप्टिंग, उनको मसला होना शुरू हो गया था कि जिनके रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं बिकॉज पीपल शेयर द म्यूज़िक एंड डू नॉट रियली पे फॉर इट. तो फिर उन्होंने कुछ केसेस किए थे, सू किया था लोगों को. दिस वाज द फर्स्ट टाइम जिसमें वो, हम जब लीगल इश्यूज की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम जबकि 2003 के अंदर लोगों को सू कर दिया गया था फॉर डाउनलोडिंग इलीगल म्यूजिक.
2004 के अंदर हमारे पास 16% of the world's population uses internet. Businesses figure out how to be profitable with e-business models because the trends were changing. People started moving on to the internet. 2004 onwards हमारे पास वो टाइम है जब वाकई ही मीडिया, न्यू मीडिया मार्केटिंग जिसको कहा जाता है या ई मार्केटिंग भी कहा जाता है, इस तरह के ट्रेंड्स इमर्ज होना शुरू हो गए. ई बिजनेस के ट्रेंड्स इमर्ज होना शुरू कर दे, ई कॉमर्स के ट्रेंड्स इमर्ज होना शुरू हो गए 2000 ऑनवर्ड्स. 2010 के अंदर जो रीसेंट फिगर्स थी उसके हिसाब से 27% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नाउ ऑनलाइन. इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के अंदर इंटरनेट यूजेज रिजल्ट्स इन मैच्योरिटी स्टेजेस, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस have internet in 2010, which means everyone is on internet. So जब सब लोग इंटरनेट पे ही मौजूद हैं तो हम भी तो उनसे उसी इंटरनेट के थ्रू ही बात कर पाएंगे ना. So businesses ने भी फिर 2010 onwards और ज़्यादा इंटेंसिवली इस पे काम करना शुरू कर दिया. उसके बाद फिर एक टाइम ये आया कि लोगों ने कहा कि जी ई मार्केटिंग और मार्केटिंग में अब क्या फ़र्क रह गया, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो अब आम लोगों की रूटीन का हिस्सा बन गया है. इंटरनेट के अलावा मोबाइल्स की पेनिट्रेशन, इवन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन रेट है, मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इन द पास्ट 10 years. सो हम कह सकते हैं कि जी इंटरनेट में की वजह से, इतनी इसकी आम अवेलेबिलिटी की वजह से, मोबाइल्स की आम अवेलेबिलिटी की वजह से जब हमारे सारे काम इस मीडियम को यूज़ करते हुए होना शुरू हो गए हैं अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल मीडिया एज वेल, सो हमारे पास मार्केटिंग और ई मार्केटिंग में फ़र्क नहीं रह जाता. ये बात कह जाने शुरू हो गई थी. सो गार्टनर ने भी यही प्रिडिक्ट किया. गार्टनर इज अ रिसर्च कंपनी जो कि ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और कंप्यूटर्स के एरिया में रिसर्च करती है, सर्वेस कंडक्ट करती है. उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था और उसके बाद उन्होंने फिर ये भी प्रिडिक्ट भी किया कि जी जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से द ई वुड ड्रॉप, मेकिंग ई बिजनेस जस्ट बिजनेस एंड ई मार्केटिंग जस्ट मार्केटिंग. बिल्कुल सही बात है कि जी आपकी नॉर्मल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है. सो इट कैन बिकम ई मार्केटिंग. लेकिन ई बिजनेस तो या ई मार्केटिंग के फिर भी यूनिक बिजनेस मॉडल्स, यूनिक कॉन्सेप्ट्स, यूनिक प्रैक्टिसेस रहेंगी हैं. इसी वजह से फिर हम इसकी डेप्थ में जाने के लिए इसको अलग से एक कोर्स के तौर पे भी ऑफर करते हैं. अब वो ऑनलाइन प्रैक्टिसेस जो हैं या जो प्रैक्टिसेस ई बिजनेस की, उसमें ऑनलाइन सर्च है, ऑनलाइन डेटा कलेक्शन है, इस तरह के कामों की वजह से हमारे पास ज़रूरी है कि जी ई बिजनेस या ई मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए. लेट्स हैव अ लुक कि वो क्यों कहते हैं कि जी ई बिजनेस सिर्फ बिजनेस रह जाएगा. आप ये देखिए कि जी द नंबर ऑफ वेबसाइट्स दैट आर लिस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं, सारे के काम जो इंटरनेट के ऊपर किए जा रहे हैं, बिजनेसेस के अंदर किए जा रहे हैं, उसको उन्होंने एक टाइमलाइन के साथ मेंशन किया है कि जी हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक फॉर मेन स्ट्रीम अडॉप्शन. सो ऑलमोस्ट थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स the plateau, obsolete before the plateau, things are happening. As of 2010, the trends have changed a lot. यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा 2 years, 5 years, 10 years और 10 years तक क्या क्या हालात रहे within this business activities. So it shows कि जी बहुत ज़्यादा इधर trends और growth rates change हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें business activities को भी चेंज करना है. Then we talk about e-marketing today. हमने Web 1 की तो बात की. Web 1 में क्या हुआ हमने वो भी जिक्र किया कि जी Web 1 वाले टाइम के ऊपर there was a time duration जो 1993 onwards रहा up till 2003 और फिर 2010 तक हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज हुई. उस टाइम पे बेसिकली हमारे पास वेबसाइट्स बन रही थी, वेबसाइट से मैसेजेस कन्वे किए जा रहे थे. That was the basic thing that was being done. सर्च इंजन्स की थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मौजूद थी, सर्च इंजन इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे, ऑनलाइन सर्च आसान हो गई थी और ऑनलाइन डेटा कलेक्शन आसान हो गई थी. आजकल जो मार्केटिंग हो रही है विच इज़ वेब 2 की स्टेज, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग टुडे,
اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لوگوں کو کنیکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تھرو سوشل میڈیا, which have created opportunities and challenges for marketers as well to be present on social media at all times. لوگوں کو کنوے کرنا ہے میسج, اپڈیٹس دینی ہے, کوئریز کے رپلائی کرنے ہیں, طرح طرح کی کوئریز آ رہی ہوتی ہیں on different social media platforms. So اس سب کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. سو ویب 2 ٹیکنالوجیز نے کیا کیا ہے کہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرا دیا ہے لوگوں کے ساتھ, اور جو پاور شفٹ ہوئی ہے فرام سیلرز ٹو بائرز ناؤ. پہلے تو لوگ صرف انفارمیشن ملتی تھی جو کمپنیز دیتی تھیں, اسی کے بیس پہ اپنے ڈیسیجنز بھی لے پاتے تھے. جو چیز اویلیبل ہے ان اویلیبل آپشنز میں سے they were at times bound to purchase or bound to take up those offers. لیکن اب کیا ہے, اب کا کسٹمر زیادہ انفارمڈ ہے, پاورفل زیادہ ہے, وہ فوراً سے آلٹرنیٹ سورسز بھی سرچ کر سکتا ہے, وہ آلٹرنیٹ کمپیٹیٹرز کے پاس بھی جا سکتا ہے, وہ آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں, I want a particular change in the type of product that I will get depending on the type of businesses they're dealing with. So power shift جو ہے وہ سیلر سے بائر کی طرف زیادہ ہو گئی ہے. کسٹمرز جو ہیں وہ اب آج کل ایک دوسرے کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں rather than companies, which means کہ اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے اور ایک ہائی لیول اماؤنٹ کی وہ چیز کی پرچیز اماؤنٹ زیادہ ہے, سو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں, آپ ان سے انفارمیشن مانگنا چاہتے ہیں کہ جی I'm going to buy let's suppose a camera, تو مجھے آپ بتائیے کہ کون سے اچھے برانڈس ہیں, کون سی پرائس رینجز ہیں, میں کس کیمرا کو پرچیز کروں, which اینڈ پیپل شیئر دیئر ویوز, اور پھر آپ کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. سو کسٹمرز ناؤ ٹرسٹ ایچ ادر یوزرز آف دوز پروڈکٹس. دین مارکیٹ اینڈ میڈیا فریگمنٹیشن ہیز also occurred. We have online connections that are very critical. So یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کل کے دور میں ہو رہی ہیں, یعنی ویب 2 کے ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں, اور اب ہم ویب 3 کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں آلریڈی. آج کل کا جو کسٹمر ہے وہ obviously we talk about saying کہ جی unquestionably ہمارا کسٹمر جو ہے وہ آج کل رول کرتا ہے. your customers rule the business landscape. They're connected, they connect, they have laptops, they have mobiles, they have PDAs, اور وہ ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ کرنا بہت آسان ہو گئی. کسٹمر رول بھی کرتا ہے, کسٹمر ایک ویل انفارمڈ کسٹمر بھی ہے, وہ سرچ کر سکتا ہے, وہ پرائس کمپیریزنس کر سکتا ہے, وہ چوائسیز بنا سکتا ہے, وہ چوائسیز میں سے چوز کر سکتا ہے. سو یور کسٹمر بیکمز اے ویل انفارمڈ کسٹمر. Everyone is connected. We are connected at all times. Connections are the reason for information retrieval, for information dissemination, for communication, for helping each other. ہر چیز کے لیے کنیکٹیو. ہم ایک ماؤس کلک کے اوپر اپنے ٹکٹ ریزرو کر سکتے ہیں, ایک ماؤس کلک کے اوپر کسی اور شہر, کسی اور جگہ کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں. اور سو مچ سو کہ کئی دفعہ تو گوگل میپس کے تھرو یا گوگل کی کچھ فیسلٹیز کے تھرو ہم اسٹریٹ ویوز بھی جا کے لے سکتے ہیں کہ آپ بھی ہم دیکھنا چاہیں کہ جی لنڈن کی کوئی ایک اسٹریٹ کیسی لگتی ہے دکھنے میں, تو وی کین ایزیلی ڈو دیٹ. سو دا کنیکشنز obviously have created a lot of difference. یہ ایک ڈیجیٹل لائف کا ایک میپ سا کریٹ کیا گیا تھا, ایک امپیکٹ سے کریٹ کیا گیا ہے بائی رینڈی. ان ہز بلاگ ہی ہیز کریٹڈ اے ڈیجیٹل لائف میپ کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی لائف جو ہے وہ بیکاز آف دا اویلیبلٹی آف ڈیجیٹل ڈیوائسز کیسے افیکٹ ہو رہی ہے. سو یو کین سی دیر آر دا ڈفرنٹ سرکلز جو کہ ایک کنزیومر کی ایکسیس میں ہیں. ہی از کنیکٹڈ تھرو ہز لیپ ٹاپ, ہی از کنیکٹڈ تھرو ہز موبائل فونز, ہی از کنیکٹڈ تھرو ہز computer devices, is connected to the television, he's connected to satellites. So ایک ڈیجیٹل لائف کا آپ کو ایک امپیکٹ سے نظر آتا ہے, ایک میپ نظر آتا ہے, and which shows that everything every time is connected. So یہ کنیکٹیویٹیز جو ہیں, یہ کنیکٹیویٹیز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں بزنسز میں بھی اور کنزیومرز کے بھی. اور یہ کنیکٹیویٹیز جو ہیں پاسبل ہوئی ہیں اگین بیسڈ آن ٹیکنالوجی, بیسڈ آن انٹرنیٹ, اور بہت چیپ ریٹس کے اوپر وہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, آرام سے کوئی بھی اس کو ایکسیس کر پاتا ہے. اب ایون اف یو لک ایٹ پاکستان اینڈ لک ایٹ ایگزامپلز ان پاکستان, وائی فائی از اویلیبل ایٹ اے ویری لو ریٹ. آپ کے پاس لو کاسٹ کے اوپر وائی فائی موجود ہے. اف یو لک ایٹ دس سلائڈ,
यहाँ पे भी एक विलेज में इन पाकिस्तान वाईफाई ब्रॉडबैंड का एंटेना आपको नज़र आ रहा है और वो अपने गांव के लोगों को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस एंटेना, which shows that हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और अडॉप्शन बहुत आसानी से की जा सकती है इंटरनेट की. So I was talking about power shift. Companies से individuals की तरफ power shift हो गई है, which means कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था वो क्या करता था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुश करते थे कस्टमर्स को. आप कहते थे कि जी दिस इज व्हाट आई हैव, परचेज इट. आप यूजिंग टेलीविजन, यूजिंग रेडियो, यूजिंग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एड्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दिए जाते थे और चीज़ दी जाती थी कस्टमर को, जी दिस इज व्हाट आई हैव एन ऑफर, बाय इट. अभी क्या है सोशल मीडिया के अंदर, लोग इंफॉर्मेशन खुद से पुल करते हैं. सो वो हम कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउ अ पुश वर्सेस अ पुल स्ट्रैटेजी इन मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर आपके पास सेंट्रलाइज्ड पुश मैकेनिज्म था और सोशल मीडिया की वजह से कस्टमर्स जो हैं वो सोशल नेटवर्क्स पे, ब्लॉग्स पे, विकीज पे और मुख्तलिफ तरीकों से इंफॉर्मेशन खुद से गैदर करना चाहते हैं. लेट्स से इफ आई वांट टू गो आउट एंड have lunch somewhere right now, तो मैं क्या करूंगी, और मेरे लिए इलाका नया है, एरिया नया है, तो आई कैन ईजिली गूगल एंड आइडेंटिफाई कि जी व्हाट इज अ गुड ईटिंग आउट प्लेस नियर वेयर आई एम राइट नाउ. सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही हूँ और कंपनी को सर्च करना चाह रही हूँ जिससे मैं वो सर्विस ले सकती हूँ. So this creates a challenge for those organizations who are there. वो कैसे अपने आप को एडवर्टाइज कराती हैं. When I search for that information, मैं गूगल में लिखती हूँ कि जी I need an eating out place around my area. So that the other end of the spectrum, आपकी जो कंपनी है उस कंपनी ने भी तो कोशिश करनी है कि जब मैंने ये सर्च की तो उसका रिजल्ट्स जो हैं वो गूगल में कहीं डिस्प्ले हों, या अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो उन पेजेस में कहीं डिस्प्लेड हों, नजर आए इस पर्टिकुलर कीवर्ड या इस पर्टिकुलर क्वेरी के अगेंस्ट. सो एक्वायरिंग अ कस्टमर फ्रॉम द सोशल मीडिया इज अ चैलेंज. कस्टमर्स को इस तरह से अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज को काम करना पड़ता है, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज नीडेड. और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं वेब 2 के अंदर. इंटरनेट अडॉप्शन जो है वो मैच्योर होती चली जा रही है. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. हमारे पास ऑनलाइन रिटेल सेल्स हैव आल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग, व्हिच मींस पीपल डू नॉट हैव ईदर टाइम और डू नॉट हैव फॉर सम अदर रीजंस कैन नॉट गो टू अ स्टोर टू मेक अ परचेज. तो वो क्या करते हैं, वो घर से ही बैठे बैठे चीज सेलेक्ट की और परचेज कर ली. सो जब इंटरनेट रिटेल सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो यू वुड वांट टू पुश योर प्रोडक्ट्स टू दोज वेबसाइट्स के जहां से वो परचेज किए जा सकें. सर्च इंजन्स आर नॉट जस्ट सर्च इंजन्स, दे आर योर रेपुटेशन इंजन्स एज वेल. वो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव्स हर चीज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं. सो वो रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं. सो दैट इज अनदर चैलेंज फॉर एन एडवर्टाइजर कि कैसे वो इसको पॉजिटिव मैसेजेस तक ही रखता है. कंटेंट इज स्टिल द किंग. कंटेंट जितना ज्यादा मिल रहा है लोगों को आपके बारे में, उतना ज्यादा वो ट्रस्ट डेवलप करने में हेल्प करता है, उतना ज्यादा वो आपके बारे में जानने में हेल्प करता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन स्ट्रैटेजी इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं, उनको और आपके जो ऑनलाइन मार्केटिंग के चैनल्स हैं उन सबको एक जैसी बात करनी है, सीमलेसली इंटीग्रेट होना है. आपकी ई कॉमर्स को, आपकी एडवर्टाइजमेंट्स ऑनलाइन को, सर्च इंजन मार्केटिंग को, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को, अलॉन्ग विद योर ब्रोशर्स और योर वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स और योर टीवी बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स और योर बिलबोर्ड्स, सब स्ट्रैटेजी को इकट्ठे इंटीग्रेट होना है जब भी आपको एक मार्केटिंग कैंपेन रन करना चाहते हैं. सो दैट बिकम्स अ चैलेंज एज वेल. देन इंटेलेक्चुअल कैपिटल आल्सो रूल्स. दिस इज अनदर चैलेंज दैट इज बीइंग फेस्ड एंड एड्रेस्ड इन द era ऑफ वेब 2. 60% ब्रॉडबैंड अडॉप्शन एट होम, लोगों के घरों में भी अब इंटरनेट मौजूद है. दैट इज ऑल्सो रीजन जो चैलेंजेस कर रहे हैं. सो देयर इज अ लॉन्ग टेल ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस that are there and that the companies and the organizations or marketers and advertisers have to look into.
सो अभी हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जी वेब 1 क्या था, वेब 2 क्या है, और अब हम किस तरफ जा रहे हैं, हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जो कि है वेब 3. वेब 3 क्या चीज है कि देयर आर लाइंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड न्यू मीडिया मार्केटिंग दैट आर बीइंग ब्लर्ड नाउ. हमारे पास जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और न्यू मीडिया मार्केटिंग है, उसके बीच में जो ड्रॉन लाइंस थी वो कम से कम होती जा रही हैं और वो एक सीमलेस इंटीग्रेशन होती चली जा रही है. आपके अप्लायंसेस आजकल जो है वो भी कन्वर्ज हो रहे हैं और दे आर बिकमिंग स्मार्ट अप्लायंसेस. हमारे पास वायरलेस नेटवर्किंग अब ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है. सिमेंटिक वेब जो है वो भी एक नया तरीक़ाकार है जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर मौजूद है एक्सेस करने के लिए, डेटा के लिए, जिस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है. अब सिमेंटिक वेब से क्या मतलब है कि इफ़ आई वांट टू सर्च फॉर समथिंग राइट नाउ गूगल में, तो मैं कुछ सर्च इस तरह से करती हूँ कि अभी तो थोड़ी देर पहले भी मैंने एग्जांपल दी लंच की, इफ आई वांट टू गो आउट एंड हैव लंच राइट नाउ, what are the nearby places. लेकिन अगर मैं साथ ये कहती हूँ कि जी मुझे लंच भी करना है लेकिन मुझे प्राइस भी बहुत ज़्यादा पे नहीं करनी है और मुझे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा चाहिए, सो मेरी जो सर्च है वो बहुत ज़्यादा, सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट रिजल्ट्स आने चाहिए. आई शुड बी एबल टू टाइप विद इन द सर्च बॉक्स दैट आई वॉन्ट टू go eat out at a place which is very nice, which is 5 minutes away and it is not too costly. So जब मैं इस तरह की सर्च करूंगी मेरे पास जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो भी बहुत स्मार्ट रिजल्ट्स आएंगे. प्रिडिक्शन या एजेंट बेस्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं. मुझे असिस्ट किया जाना चाहिए बाय द सर्च इंजन whose services would I be using, और वो एडवर्टीजमेंट्स उसके ऊपर कैसे रन हो रही हैं उसकी वजह से मेरे पास अच्छे रिजल्ट आने चाहिए. सो एक काइंड ऑफ अ स्मार्ट वे ऑफ sending information out or having information available is available. फिर आपके जो डिवाइसेस हैं वो स्मार्ट शॉपिंग, अभी एग्जांपल में आपको सामने स्क्रीन के ऊपर ये एक स्मार्ट शॉपिंग डिवाइस भी नजर आ रहा है कि रादर देन यू गो आउट थ्रू द स्टोर, आपके पास ये डिवाइस मौजूद है और आप इसके ऊपर क्लिक करते चले जाते हैं और परचेजेस होती चली जाती हैं, आपके बास्केट में ऐड होती जाएंगी. आप स्टोर के एंड पे आएंगे, आपको आपका स्टोर कीपर वो सारी चीजें एक बैग में पकड़ाता है कि जी दिस इज व्हाट यू हैव बॉट, हियर इट इज फॉर यू, या स्टोर असिस्टेंट हेल्प आपको कर सकता है. सो इस किस्म के काम जब किए जाएंगे, सो दिस आर ऑल योर फ्यूचर बेस्ड एक्टिविटीज जिसमें अगेन मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से की जा सकती है स्मार्ट डिवाइसेस की बेस के ऊपर. इमेजिन हम अगर टाइम डिवाइसेस को देखिए, वी यूज्ड टू हैव अ सन डायल इन द ओल्ड टाइम्स. सूरज की रोशनी और उसके इम्प्रेशन की बेस के ऊपर लोग टाइम का अंदाज़ा लगाते थे. फिर क्लॉक्स डिवाइस होने शुरू हुए, फिर उसके बाद वॉचेस आ गई, फिर स्मार्ट वॉचेस आना शुरू हो गई, फिर हमारे पास हर डिवाइस के अंदर टाइम का एलिमेंट ऐड होना शुरू हो गया. सो क्या हो रहा है कि हमें ऑटोमेटिकली वो डिवाइसेस मिल रहे हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए. इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि अगर इंटरनेट भी चेंज हो जाए. अभी हम इंटरनेट को जाके सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं कि जी हमें ये चाहिए, जैसे कि हम पहले सर्च करना चाहते थे, अंदाजा लगाने चाहते थे पुराने जमाने के लोग कि टाइम अभी क्या है. इसी तरह से अब हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंटरनेट से. इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे स्मार्ट एजेंट्स हैं, स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली हमारी नीड्स को देखते हुए या हमारे पैटर्न्स को, हमारे इंटरनेट के यूजेज पैटर्न्स को, टेक्नोलॉजी के यूजेज पैटर्न्स को देखते हुए हमें वो प्रेडिक्टिव रिसर्च करके या प्रेडिक्टिव सर्च करके दे सकता है कि जी दीज आर योर प्रेफरेंसेस एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस यू माइट नीड दिस. So that type of activities and advancements are being evolved और वो future है web का, और ये future का web जो है ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा opportunities create कर सकता है. This little slide here displays us the whole history in one slide. हमने web 1 का जिक्र किया जिसमें हमारे पास websites थे, started documents थे जिसको मैंने hypertext documents के तौर पे आपको बताया, email, forums, bandwidth, low bandwidth हुआ करती थी, limited hardware था. This was the time which was considered as web 1. Web 2 जब emerge हुआ तो we had your search engine based
वर्क, सोशल मीडिया बेस्ड वर्क. हमारी वेबसाइट्स थोड़ी डायनामिक होना शुरू हो गई. दैट मीन्स के इंटरेक्शन शुरू हो गया वेबसाइट्स के थ्रू. विकीज आ गए. वी हैड पॉडकास्ट्स और वीडियो का पॉडकास्ट. हमारे पास RSS फीड्स इंक्लूड होना शुरू हो गई मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर. सोशल नेटवर्किंग आ गई, ब्लॉगिंग, बैंडविड्थ, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर गई. और कंप्यूटिंग जो है वो लो कॉस्ट होना शुरू हो गई, चीप होना शुरू हो गई. लो कॉस्ट इंटरनेट, वाईफाई भी अवेलेबल होना शुरू हो गया. सो दिस वाज द टाइम दैट वाज वेब 2 जो कि मार्केटर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. वेब 3 की तरफ वो जाना शुरू हो गए हैं. माइक्रो नेटवर्क्स बनना शुरू हो जाएंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, काम हो रहा होगा कि आप इस कंप्यूटर को जिसको यूज़ कर रहे हैं उसकी हार्ड ड्राइव पे चीज़ें स्टोर करते हैं, बट वो वहीं से अवेलेबल होती हैं. इवेंचुअली if you are outside, not near your computer, you are stuck. You need to get back to your computer to get a file, particular file या कोई information निकालने के लिए. Cloud computing जो कि आजकल बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गई है in the form of सॉफ्टवेयर ड्रॉपबॉक्स या बॉक्स के नाम से हर एक ने अपने मोबाइल पे भी रखा हुआ है, कंप्यूटर पे भी रखा हुआ है, ऑफिस के वर्क स्टेशन पे भी रखा हुआ है. सो क्या हो रहा है, वट एवर यू सेव इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अलावा कहीं और एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम के अंदर भी, सॉफ्टवेयर के अंदर भी स्टोर कर लिया जाता है. और वो फिर जितने और डिवाइसेस हैं जो उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है. विच मीन्स दैट इफ आई अपलोड अ फाइल इन माई कंप्यूटर राइट नाउ, आई वुड बी एबल टू एक्सेस इट थ्रू अनदर डिवाइस, माई ऑफिस PC और माई मोबाइल फोन लेटर. मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं वापस जाऊं और अपने कंप्यूटर को एक्सेस करूं और उसके बाद आके उस पे से इंफॉर्मेशन ले सकूं. दिस इज द इंटरनेट टाइम एनालिसिस जिसको मैं रेफर कर रही थी व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट वेब 3 कि हमारे पास चेंजेस आई हैं और हमने टाइम जो है वो को देखना शुरू कर दिया. सनडायल से लेकर हम रिस्ट वॉचेस तक आ गए और अब हमारे डिवाइस के अंदर भी हमारे पास टाइम देखने की फैसिलिटी मौजूद है. इसी तरह से हमारे पास इंटरनेट भी इवॉल्व हो रहा है और इस स्टेज तक जा सकता है जिसमें हमें असिस्टेंस मिल सके इंटरनेट से और फिर वही चीज एक्सप्लॉइट कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर मार्केटिंग. हाउ डू एक्सपर्ट्स कैरेक्टराइज वेब 3? ठीक है, what do they say? Semantic web will be achieved and the mobile device will be the primary internet connection tool by 2020 and we are already seeing this. हमारे आजकल के स्मार्टफोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस are able to do almost everything. हम अपनी ईमेल भी चेक कर सकते हैं, हम इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, हम लोगों से कनेक्शंस भी कर सकते हैं यूजिंग द सोशल मीडिया. हम बहुत सारे काम अपने स्मार्टफोन से ऑलरेडी करना शुरू हो गए हैं. सो दे आर सेइंग कि जी हमारे पास सिमेंटिक वेब जो है वो क्या करेगा और मोबाइल डिवाइसेस जो है वो आराम से 2020 तक हमारे पास बहुत ज़्यादा में मौजूद हो सकेंगे. देन interactive media will cannibalize traditional media. Already seeing that happening as well कि हमारा जो interactive media है, जो कि ads हमारे चल रहे हैं using interactive media या interactive ads से मेरा मुराद ये है कि if I see an ad let's say on my computer, I can click on it to get more information and in response to my click, I will be redirected to the source जहाँ पे information और मौजूद है. फिर मैं उधर उनको query भेज भी सकती हूँ, कई दफ़ा उनसे डायरेक्टली लाइव चैट भी कर सकती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के पास से अगर वहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है. इस तरह के काम मैं कर सकती हूँ. Web3 will ultimately be seen as applications which are pieced together, run on any device, are very fast and are distributed virtually. That is also starting to happen. मैंने अभी cloud computing का जिक्र किया. So a lot of work is now being done on or the next stage which is Web 3. Let's summarize. हमने आज क्या बात की? हमने आज बात की past, present and future की, इंटरनेट की और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की. हमने आज डिस्कस किया कि कोर्स में क्या क्या पढ़ा जाएगा, क्या क्या कंटेंट होगा. हमने कुछ डेफिनेशंस का जिक्र किया जिसमें ई कॉमर्स की डेफिनेशन थी, ई बिजनेस की डेफिनेशन थी, ई मार्केटिंग की डेफिनेशन थी. फिर हमने ये भी देखा कि कैसे ई मार्केटिंग का लैंडस्केप बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है. कस्टमर्स के पास अब ज़्यादा पावर आनी शुरू हो गई है, कस्टमर्स ज़्यादा
انفارمڈ ہیں, کسٹمرز رول کرتے ہیں, اور ان کسٹمرز تک انفارمیشن پہنچانے کے طریقے اور بھی ہیں رادر دین دا ٹریڈیشنل میڈیا. ٹی وی اور بروشر اور اخبار کے ایڈز کے علاوہ ہم انٹریکٹیو طریقوں سے زیادہ جلدی لوگوں تک اپنی انفارمیشن, اپنے ایڈز, اپنے پروڈکٹس بھیج سکتے ہیں, اپنی سیلز انکریز کرا سکتے ہیں. اور اس چیز کو مانیٹر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب ہم انٹرنیٹ کے تھرو یا کسی کمپیوٹر سسٹم کے تھرو یا ایڈورٹائزمنٹس تھرو گوگل کرتے ہیں تو ہم فوراً ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایڈ کی کیا رسپانس رہی ہے, رسپانس ریٹس کیا ہیں, اس کے اوپر کتنے لوگوں نے کلک کیا, کتنے لوگوں نے اس کے اوپر سے کوئی چیز پرچیز کر لی, کتنے لوگوں نے ہماری انفارمیشن آگے اور لوگوں کی پہنچا دی, وچ از آلسو پارٹ آف مارکیٹنگ یا ای مارکیٹنگ. پھر ہم نے انٹرنیٹ اور ویب کی مختلف اسٹیجز کو سمجھا, دیکھا اور کچھ ایگزامپلس ڈسکس کی. دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. کل ہم دوبارہ اگلے لیکچر کے ساتھ آئیں گے جس میں ہم کچھ پاکستان کے انٹرنیٹ لینڈسکیپ کا ذکر کریں گے اور ہم آگے کے کورس کی ڈیٹیلز کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہیں, ڈو آسک یور ٹیوٹرز. اللہ حافظ.